Pakistan's TTP dilemma, what the 38th UN report reveals about Taliban support. After the Taliban returned to Kabul, Islamabad expected a safer western frontier. Instead, TTP violence intensified and bilateral relations entered their most dangerous phase in the years. So the central question is what Pakistan should learn and do now. Pakistan expected strategic relief but received security blowback. After the US withdrawal from Afghanistan and takeover of TTP, what Pakistan expected was a friendly government in Kabul, reduced Indian influence, cooperation against anti-Pakistan militants. But today, what is reality? It is really that TTP attacks have escalated, military exchanges with Afghanistan, trade, border, and diplomatic disruptions. These are the realities of 2026 against the expectations. So the policy error was overestimating the influence that historical context would provide after the Taliban became a governing regime. 38th report of the UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team ये बता रही है कि जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं वो टीटीपी को ना सिर्फ सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं मगर वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और टीटीपी ने पाकिस्तान में अटैक्स बढ़ा दिए हैं which are evident from attacks in 2026. So it is significant to remember that Taliban not only provides safe havens to TTP but also support them through different means. Because TTP attacks are organized from Afghan territory, Taliban support continued as TTP attacks escalated. ये UN की 38th report बता रही है कि तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं. This provides that Kabul provides this proves that Kabul provides safe havens to TTP and also it rejects the idea of Taliban that problem is purely internal to Pakistan. क्योंकि तालिबान ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है मगर ये जो रिपोर्ट है और भी कई रिपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है जो पाकिस्तान ने कलेक्ट करके यूएन में भी सबमिट करवाई है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बताया कि वो ये सपोर्ट करती हैं कि वो ये प्रूव करती हैं कि तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तान का सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है. The newest UN assessment is named as ACE 2026-651 38th Monitoring Team Report, which was released on August 10, 2026. It is an intelligence-based sanctions assessment. Why this report matters for Pakistan? Because it supplies an international assessment against which Pakistan's security claims can be evaluated. Some claims are attributed to one or more member states and must retain their attribution. Five findings directly affect Pakistan. वो findings क्या हैं? वो है कि Taliban authorities continued supporting the TTP. TTP attacks against Pakistan escalated. Cross-border attacks provoked military exchanges. TTP announced Operation Khyber against Pakistan. Advanced weapons continued strengthening terrorist lethality. These points come from the report's summary in paragraphs 91, 98 and 131 if you want to use as a reference. Operation Khyber was announced in multiple languages and called for attacks against security forces and civilians. ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये जो रिपोर्ट बता रही है ये जो ऑपरेशन खैबर टीटीपी ने अनाउंस किया ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अनाउंस किया अपने जो टीटीपी के मेंबर्स हैं उनके कन्वीनियंस के लिए और दूसरे रीजन्स की कंट्रीज को भी एक पैगाम देने के लिए. This report also describes TTP is adapting its organization and ambitions. TTP is restructuring and Operation Khyber. There's also they have established is a name
फिलहाल उन्होंने नाम ही दिया है एयरफोर्स। अभी कोई भी ऐसी रिपोर्ट या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि उनके पास टीटीपी का पास एयरफोर्स है। So this does not prove conventional air capability. It signals organizational attention to drones or aerial means. उनके पास एरियल कैपेबिलिटी नहीं है, मगर दूसरे जो जैसे ड्रोन्स हैं और एरियल मीन्स हैं वो उनके पास हो सकते हैं और उन्होंने यूज़ भी किए हैं। एंड ये जो है एक इंडिकेशन भी देता है कि इन फ्यूचर दे माइट अक्वायर एयरफोर्स, बट द लेबल इज द टीटीपीज ओन। ये जो लेबल है ये टीटीपी ने खुद दिया है, खुद जाहिर किया है। सो फॉर पाकिस्तान द थ्रेट इज बिकमिंग जियोग्राफिकली ब्रॉडर एंड टेक्निकली मोर एडेप्टेबल। आल्सो देयर रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, न्यू बलोचिस्तान एंड सेंट्रल डिवीजन, न्यू कश्मीर एंड गिलगित डिवीजन, अ डिवीजन डिस्क्राइब्ड एज द टीटीपी एयरफोर्स। ये तीन चीज़ों है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग है। और ऑपरेशन खैबर स्प्रिंग कैंपेन that was announced in March, targeting security forces and civilians. Bajod attack cited by the UN report. Also, जो बाजोड अटैक है वो भी यूएन की रिपोर्ट ने साइट किया है कि it was claimed by TTP also. The Al-Qaeda connection multiplies Pakistan's threat. This report also says Al-Qaeda's official media outlet publicly supported the Taliban, and for the first time TTP operations against Pakistan. Or it also describes AQIS. AQIS क्या है? Al-Qaeda in the Indian subcontinent, and IMP, Ittihadul Mujahideen Pakistan. These organizations have not merged into one, but they have links and reported cooperation. ये जो organizations हैं अभी merge नहीं हुई है, इनके अपने खुद में एक cooperation है। अलकायदा क्या है, क्या कर रही है, वो ideological guidance दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और operational support दे रही है TTP को। TTP की क्या कर रही है, insurgency against पाकिस्तान। और ये जो AQIS और MIP है, ये क्या है, ये decentralized cells हैं, लॉजिस्टिक्स, फिनांस, अटैक नेटवर्क्स। ये मतलब नीचे की सतह पे काम करते हैं, फिनांस कलेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, कभी कभी इंडिविजुअल्स को हायर करके या ट्रेन करके उनको भेज देते हैं, उनको कहीं एक से उनको जो लॉजिस्टिक्स है, जो वेपन्स हैं वो उनको अवेल करके देते हैं, जैसे वो सुसाइड बॉम्बिंग कर सकें। उनके अटैक नेटवर्क्स हैं वो क्या कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है AQIS और MIP। ये यूएन की रिपोर्ट कर रही है। और ये पहली बार है कि अलकायदा ने एक्सप्लिसिटली कहा है, पब्लिक सपोर्ट को अप्रिशिएट किया है, उसको एडमायर किया है और अनाउंस किया है कि दे आर सपोर्टिंग तालिबान एंड TTP अगेंस्ट पाकिस्तान। एडवांस वेपन्स रेज द लिथलिटी ऑफ अटैक्स। रिपोर्ट की एक वार्निंग है कि लार्ज स्टॉक्स रिमेन 5 years आफ्टर द तालिबान टेक ओवर। यूएस के विथड्रॉल के बाद 5 साल हो गए, मगर वहाँ यूएस जो वेपन्स छोड़ के गया है वो बहुत बड़े स्टॉक्स में है और लिथल वेपन्स हैं which are used against Pakistan. Taliban authorities can transfer weapons to TTP and others. They have transferred, and those weapons have been used against Pakistan. Also, they have night vision systems which improve the fighting capability in night. They have modern equipment which increase the lethality against security forces. So the advanced equipment remain available and enabled transfers to TTP and other groups. ये कौन कर रहा है, ये तालिबान गवर्नमेंट कर रही है, तालिबान रिजीम कर रही है। Some member states reported night vision systems improving listed entities capabilities and lethality. Pakistan recorded 4,155 casualties in January to July 2026. ये सिर्फ जनवरी से जुलाई 2026 तक है ये fatalities. During January-July 26, 200
2,786 fatalities linked to terrorism and counter-terrorism violence, including 463 civilians, 434 security personnel, 32 peace committee members, 1,857 militants. Approximately 1,369 people were also injured. ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट है. This is the report from 2025. PICS has recorded 3,413 combat-related deaths and 1,066 militant attacks in 2025. It recorded 667 security personnel and 580 civilian fatalities. KP bears the immediate burden of the Western border crisis. CRSS recorded 774 violence-linked fatalities in 2026. KP and Balochistan accounted for almost 96%. Pakistan's official case demands verifiable action. Technical intelligence links attacks to militants in Afghanistan. UN reports document that permissive environment, diplomatic talks have not produced meaningful action. पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, डिफेंस मिनिस्टर को भेजा, हमने उलमा को भेजा, सिविल जो अदर सिविलियंस हैं उनको भेजा, जो अदर कमिटीज हैं सिविलियन ट्रेड यूनियंस उनको भेजा, बट द diplomatic talks have not produced meaningful action. Pakistan reserves the right to protect its citizens. Required action must be concrete, verifiable, and non-reversible. Pakistan's 11 May demarque after the Bannu attack said technical intelligence indicated that the attack was masterminded by terrorists residing in Afghanistan. It demanded concrete and verifiable action from Taliban. Relocation is not the same as dismantlement. This report also says relocation and back channel warning has appeared. The critical Pakistani question is whether these measures were independently verified and whether they produced disarmament, arrest, infrastructure closure, or sustained decline in attacks. The report claim कर रही है कि 2,000 TTP fighters and their families were relocated. Also, Kabul warned leaders to halt TTP leaders to halt attacks. मगर पाकिस्तान का सवाल जैसे मैंने पहले ही बताया, Pakistan's critical question is that whether these measures were independently verified. क्या ये वाकई में हुआ है या just it is an assessment and a report? What Pakistan still needs is disarmament, leadership restrictions or arrests, closure of camps and logistics, verified decline in attacks. ये पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान चाहता है. Kabul treats ISILK and TTP differently. क्यों? क्योंकि काबुल को, तालिबान को खुद ISILK से खतरा है. उनको मिलिट्री एनिमी समझता है तालिबान. कैपेबिलिटीज उनकी डिमिनिश की गई हैं बाय तालिबान. और जो TTP है उनका हिस्टोरिकल पार्टनर है, उनको सपोर्ट दे रहा है, उन पे कोई लिमिट नहीं है. रिस्ट्रेंट लिमिट हैव बीन रिपोर्टेड बट इट्स नेग्लिजिबल. और ऑन द अदर हैंड Al-Qaeda long standing ties with Taliban, training and support networks persist also of Al-Qaeda in Afghanistan. So the selective treatment suggests a problem of political will as well as states capacity. ये जो selective ट्रीटमेंट है ISIL और TTP के लिए, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. अफगानिस्तान TTP को क्यों नहीं ख़त्म करना चाहता या उनके जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के हवाले क्यों नहीं करता? एक तो वो उनके साथ तालिबान के साथ मिलकर US के अपोजिट में लड़े हैं, दूसरा उनकी आइडियोलॉजी सेम है, और तीसरा तालिबान को ये खतरा है कि अगर हम इनसे लड़ेंगे, इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISIL है, उनके साथ ये चले जाएंगे और हमारे लिए तालिबान के लिए खतरा बढ़ जाएगा. इसलिए वो उनको ख़त्म नहीं कर रहे और उनको सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान. Pakistan must recognize the limits of its Afghan influence.
This is policy evolution, not an allegation of total Pakistani control over the Taliban. It has been said that Pakistan had good relations with Taliban. It is a policy evolution. ये कोई एलिगेशन नहीं है मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से पाकिस्तान पे. It's a policy evolution. Pakistan facilitated the peace process and expected security benefits, but the post-2021 outcome shows that the influence that Pakistan had, that access Pakistan had, and control are different things. पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस था तालिबान के साथ, उनके साथ जो हमारा एक्सेस था, ये जो एक कंट्रोल होने से मुख्तलिफ है. पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, दुआ जो पीस प्रोसेस था उसको, एक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजिक लीप, आल्सो टीटीपी सीजफायर कोलैप्स, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड. ये एक टाइमलाइन मैंने दी हुई है. सो द लेसन इज आइडियोलॉजिकल सॉलिडिटी एंड रिजीम इंटरेस्ट कैन ओवरवे ग्रेटिट्यूड एंड हिस्टोरिकल डिपेंडेंस. Pakistan's Afghan policy suffered from 4 miscalculations. This is the critical analysis slide required for CSS and PMS. आपको इसको बैलेंस करना है. Pakistan's diplomacy was not irrational, but it relied on assumptions that did not survive the Taliban's transition from insurgency to government. वो miscalculations क्या थी? Overestimating leverage over the Taliban government, treating a security relationship as a durable strategic alignment, underestimating Taliban TTP ideological and wartime ties, relying on Kabul while domestic implementation remained incomplete. ये जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप, ये हमने क्या किया था? ओवर एस्टिमेट किया था. पाकिस्तान ने इसको ओवर एस्टिमेट किया. हमारा कोई तालिबान के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप नहीं था 2021 के बाद, 2021 से पहले, मगर हमने इसको ओवर एस्टिमेट किया कि हमारा सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनेगा और पाकिस्तान और तालिबान क्या करेंगे, मिलकर ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे. A friendly regime is not automatically a compliant regime. पाकिस्तान ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि फ्रेंडली regime होगी, मगर वो भी नहीं है. Afghan sanctuary cannot explain every domestic vulnerability. External enabler क्या है? Sanctuary and logistical space है, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स हैं, weapons and training support है. Internal enablers क्या है? Weak policing and prosecution से हमारे गवर्नेंस गेप्स हैं, जो vulnerable districts हैं उनमें financing, propaganda, recruitment भी आपके सामने. So Pakistan's revised national action plan covers terror financing, media and cyber networks, CTT capacity, criminal justice, countering violent extremism, and reforms in merged KP districts. Cross-border sanctuary and domestic resilience are complementary, not competing. So पाकिस्तान को इस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन विद फुल फोर्स करनी चाहिए. किसकी? नेशनल एक्शन प्लान की. क्रॉस बॉर्डर फोर्स प्रेजेंट्स अ लीगल एंड स्ट्रेटेजिक डायलेमा. Article 51 recognizes self-defense after an armed attack, but necessity and proportionality remain important. And the legality of force against non-state actors on other states' territory is contested. पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट क्या है? Inherent right of self-defense, protection against armed attacks, targets described as terrorist infrastructure. Legal test and risk क्या है? Necessity and proportionality, Afghan sovereignty, civilian protection and evidence, reporting under Article 51. Pakistan describes its operations as self-defense. Civilian casualty claims are disputed. पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम टेररिस्ट हाइडआउट्स को ही ख़त्म कर रहे हैं, उन पे ही हमले करें, हमारा सिविलियन कैजुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हमला किया है. पाकिस्तान कॉस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड बैटलफील्ड कैजुअलिटीज. कहाँ तक पहुँच रही है हमारी कॉस्ट? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट. सिक्योरिटी में पर्सनल एंड सिविलियंस, इकोनॉमी में ट्रेड एंड बॉर्डर क्लोजर्स, डिप्लोमेसी में रिलेशंस विद काबुल,
development में KP governance and investment. Instability also threatens Chinese citizens, CPEC projects, and regional connectivity. So the persistent militancy diverts fiscal and administrative capacity, also disrupts border trade, weakens investment confidence, and places development burdens on KP and Balochistan. Pakistan needs benchmarks, not another verbal assurance. पाकिस्तान कहता है कि फ्रीज करो मूवमेंट ऑफ नेम लीडर्स, क्लोज करो कैंप्स एंड लॉजिस्टिक्स को, ब्लॉक करो फाइनेंसिंग एंड कम्युनिकेशंस को, शेयर वेरीफाइड इंटेलिजेंस, और उनकी वेरिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मेजर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ट्रैक अटैक फ्रीक्वेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सेट डेडलाइंस एंड रिव्यू मैकेनिज्म्स, लिंक इंसेंटिव्स टू वेरीफाइड कंप्लायंस. ये पाकिस्तान चाह रहा है और ज़रूरी भी है. This translates Pakistan's demand for verifiable and non-reversible action and observable indicators. A workable strategy combines 5 instruments: diplomacy, deterrence, policing, governance, region में build joint pressure. A dual-track strategy, calibrated pressure and engagement with Kabul. ये dual-track strategy होनी चाहिए. Calibrated pressure and engagement with Kabul, plus domestic counter-terrorism capacity, border security, governance and counter-radicalization. ये ज़रूरी है पाकिस्तान के. No single military or diplomatic or domestic measure can dismantle a cross-border insurgency. So ये सारी चीज़ें हमें बुलानी पड़ेगी. किसी एक चीज़ से हम militancy को ख़त्म नहीं कर सकते. Regional partners can increase the cost of Taliban inaction. Regional diplomacy reduces the perception that TTP is only a bilateral Pakistan-Afghanistan dispute. Pakistan should share evidence, seek common benchmarks, and use sanctions monitoring mechanisms while retaining direct dialogue. Regional में कौन-कौन से? China, Gulf states, Central Asia, United Nations Security Council, इन से हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए जिससे हम तालिबान पे प्रेशर बढ़ा सकें और काउंटर टेररिज्म को भी यूज़ कर सकें. चाइना के साथ सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स प्लस सीपेक, गल्फ के साथ डिप्लोमेटिक लेवरेज, सेंट्रल एशिया शेयर्ड मिलिटेंट थ्रेट, उनको भी मिलिटेंट थ्रेट है, सिर्फ हमें नहीं. यूज दिस स्ट्रक्चर इन CSS, PMS and CC answers. You have to distinguish fact, official allegation and analysis. A high-scoring answer should criticize both Taliban support and Pakistan's own policy gears, then recommend external pressure alongside domestic reform. एक सवाल है, evaluate the Taliban-TTP relationship and its implications for Pakistan national security. Define Afghanistan, Taliban and TTP, explain historical ties, present 38th UN findings, evaluate Pakistan's Afghan policy, examine internal plus external causes, recommend a dual track strategy. So the 38th report validates Pakistan's concerns, but not every policy response. The policy must combine verifiable Afghan action, regional diplomacy, legal restraint, domestic policing and governance. If you want every major international development converted into structured CSS, PMS and CC notes, subscribe to Khyber Civil Services Academy and follow the News to Notes series. Thank you.